Such a bleak picture, how at least 59 people have died and millions of others have been stranded by widespread flooding across parts of Bangladesh. There is no road communication, no rail communication, no air communication. The only mode of communication is boat. হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश के सिलेट के अंदर सैलाब की बदतरीन सूरत हाल के ऊपर आलमी मीडिया भी अब बांग्लादेश पर नज़र रखे हुए है। सिलेट के अंदर बदतरीन सैलाब की वजह से तकरीबन 59 के करीब डेथ हो चुकी है और लाखों लोग, मिलियन के अंदर लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। और बदतरीन बांग्लादेश की तारीख का 20 साल बाद बदतरीन सैलाब सिलेट के अंदर मौजूद है। पूरी सिलेट की रियासत डूबी हुई है। आलमी मीडिया का क्या कहना बांग्लादेश के बारे में और बांग्लादेश के अंदर आने वाले सैलाब के बारे में। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी Go. Now, at least 59 people have died and millions of others have been stranded by widespread flooding across parts of Bangladesh and northeastern India. The monsoon storms triggered lightning strikes and landslides while rivers burst their banks, submerging homes under the floodwaters. And with many transport links cut off, the army has been called in to help rescue those who are still trapped. Officials in the worst-hit areas described the situation as grim. Well, earlier I spoke to Saeeda Rizana Hassan, who heads the Bangladesh Environmental Lawyers Association, and began by asking her what the situation is right now. It's very bad. It's unprecedented almost. The northern part is very badly affected, and it's being said that 64 sub-districts of 10 districts are completely marooned. So 9 million people are underwater. I mean, have you ever thought that something like this would happen? People are saying it's the worst for 20 years. See, flood is no stranger to us. We are no strangers to flood. But the scale at which it has happened this year, even people who are in their 60s and 70s are saying that they have not seen so much of water in their lifetime. And you're saying 9 million people potentially affected. What does that mean? Does that mean displaced? They can't go back to their homes? No sanitation? What does it look like? There's no transportation, there's no electricity, nobody is in a position to cook any food. Even the hospitals do not have electricity supply. They are treating people with candles. The rescuers are finding it difficult to make their way to the households that are affected. There is no road communication, no rail communication, no air communication. The only mode of communication is boat. Even the mainstream media is finding it very difficult to reach to the people. So all we know is they are underwater. Even my colleagues, I've got 5 colleagues in Sylhet. I haven't been able to talk to them in last 3 days. So no food there, no electricity, no medical supply, nothing. So this potentially could get worse because you don't know how bad the picture actually is yet. Absolutely, absolutely. And we are just talking about people, but they have poultry, they have cattle, people have their houses, people have their trees, people have their orchards, people have their crops. I don't think they have been able to save anything. So it is really going to be very devastating, and it will be quite a pressure on the government and of course the people of Bangladesh to ensure that these people are, end of the day, completely rehabilitated. Such a bleak picture. How much of this is due to climate change? Well, definitely a significant part of it is due to climate change because in that part of India, this type of rainfall first occurred in 1956 and then in 1995. So there was a gap of 50 years. But after 1995, it's this year, 2022. So within just 27 years. So it is definitely the global warming that is causing more vapor, which is leading to this increased rainfall. And their model of development is like cutting forests, raising hills, which is leading to siltation of the
waterways here in Bangladesh. So it's definitely global warming for a large part of it, and then being non-respectful of the nature. Saida Rizwan Hassan, thank you very much for speaking to us. Thank you. तो जी ये थी वीडियो, और आपने वीडियो में देखा कि मुकम्मल इसकी तफसीलात दी गई है कि क्या सूरत हाल है सिलेट के अंदर। बांग्लादेश से इनकी नुमाइंदा ने बात की और बताया कि सिलेट के अंदर इस टाइम पे क्या सूरत हाल है। वहाँ पे बिजली नहीं है, सड़कें राब्ता मुनक़ता हो गया है, बिजली भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आपके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोट के ज़रिए आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं। लेकिन तमाम सिलेट पानी के अंदर है, और इनके 5 नुमाइंदे हैं वहाँ पे, 5 कुलीग है, और उनमें से किसी के साथ इनका 3 दिन से राब्ता नहीं है कि वहाँ पे इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि किसी रिश्तेदार को ये नहीं पता कि सिलेट के अंदर उनके रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे कैसी सूरत हाल है। हुकूमत भी काफ़ी अंडर प्रेशर है, हुकूमत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ऐसे हालात से निकलने की। लेकिन आज फिर यही बात की गई कि भारत की ना तजर्बाकारी और उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश के लिए ख़तरा साबित हुए, और मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी भारत की हद दर्मी की वजह से फराका बिराज के आज सारे दरवाजे खोल दिए गए और पानी का बहाव बांग्लादेश की तरफ था। आज भी देखना होगा कि भारत को इस चीज़ को समझना होगा कि पानी रोक कर बांग्लादेश का हक मारता है, और जब पानी ज़्यादा होता है तो खुद भी डूबता है और साथ बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाता है। हर साल बांग्लादेश की हुकूमत को 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है इस फराका बिराज की वजह से, इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो बांग्लादेश के अंदर इतना बदतरीन सैलाब आज से 20 साल पहले आया था जो कि इस टाइम पे आया हुआ है, और बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं। बांग्लादेश की सिलेट की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बन चुके हैं, और वहाँ पर फ़ौज उनकी मदद कर रही है, वहाँ पर सिविल इदारे उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद शायद नाकाफ़ी है। उनकी मदद के लिए मज़ीद इदारों को काम करना पड़ेगा, इंटरनेशनली इदारों को अब बांग्लादेश के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 9 मिलियन के करीब लोग अफेक्ट हुए हैं इस सैलाब की वजह से। 9 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं इस सैलाब की वजह से, और बांग्लादेश के अंदर 9 मिलियन लोग इस टाइम पे सिलेट के अंदर सैलाब की वजह से परेशान है। तो आलमी इदारों से भी यही अपील है कि जितनी हो सके बांग्लादेश के सिलेट की मदद की जाए और इन लोगों को इस सैलाबी सूरत हाल से बचाया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।